Hi, so it's 11:50 a.m. On 15th of July and we are having a breakout. So हम लोग पहले वीडियो में हम लोग जस्ट जो 1 घंटा पहले हम लोग डिस्कस किए थे, जो आपको अपर राइट हैंड कॉर्नर में मिल जाएगी, जहाँ पे हम लोग फ्यूचर निफ्टी ट्रेड्स के बारे में बात कर रहे थे एंड वी वर वेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर ब्रेकआउट कैंडल टू कंप्लीट। और तब हमने जब डिस्कशन की थी तब हमने बोला था कि यहाँ पे वॉल्यूम है नहीं है। सो अभी अभी फ़िलहाल दिख रही है कि यहाँ पे वॉल्यूम है or at least is more than the average. So basically, Nifty is looking good, right? Abhi now is the time for me to enter and try to plan a trade. और ये वीडियो उसी के अनुसार ही है, ठीक है। तो अगर निफ्टी में ये अगर ब्रेकआउट सचमुच है तो निफ्टी मेड ऑल टाइम हाई ऑफ 940, right? And Nifty is right now at 935, right? So how I trade these setups, right? So from technical aspects, I think it's looking good. एक breakout आई है, it was able to sustain, it gave a good candle closing, but इसमें एक ही जो thing the thing which is sort of negative to neutral is ये जो next candle हुई है, ये within this big green candle हुई है. So if you see this closed at 937 over here, and here this one started and made a high of 938, and right now is trading at 935. So basically it might turn out to be a very bearish pattern for now, and going forward I would like to see how the levels of 920, अगर ये 920 region में जाके अगर कुछ reversal ली, and that would be much more interesting to me. Until then I would keep a neutral view as always, क्योंकि अगर इसको ये breakout देनी है, maybe because of expiry people are not going to go above it's not going to go above 940, लेकिन मे बी हु नोज, राइट। द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो इज मैं अभी एक क्विक डेटा एनालिसिस हम लोग करेंगे, और इसमें हम लोग निफ्टी 50 में कैसे पोजीशंस बन रही हैं ये हम लोग स्टडी करेंगे. सो लेट्स रिफ्रेश एंड लेट्स वेट फॉर द फ्रेश डेटा. सो here you can see that companies like Tech Mahindra, HDFC Bank, जो हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो at 10 o'clock, we were able to identify HDFC Bank and Wipro और LT एंड हिंडाल्को. अब एक्चुअली अभी मैं वही एक ट्वीट किया विद इन द लास्ट 5 मिनट्स कि हिंडाल्को, एक्सिस बैंक और अल्ट्रा केमको, ये 3 कंपनीज अभी ट्रेंड में आ रही हैं एंड दे आर गिविंग अ वेरी गुड मूव, एंड दिस इटसेल्फ इज अ वेरी गुड न्यूज़, क्योंकि यहाँ पे आप देख सक रहे हो कि HDFC विच वॉज अ लैगर ड्यूरिंग द अर्लियर सेशन, दिस इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग. हम लोग HDFC लाइफ के बारे में बात किए थे, सो दिस इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग. सो गोइंग फॉरवर्ड these are very good companies जो momentum thrust generate करेगी. And this is, you see, ICICI Bank, Infi. So Tata Steel made an all-time high. Unfortunately, Tata Steel I have not been able to trade since few sessions now, क्योंकि इसमें कभी ट्रेंड मीनिंगफुल बनी ही नहीं और मैं कभी ट्रेंड के अगेंस्ट जाता नहीं हूँ. बट राइट नाउ यू कैन सी दैट इफ यू वांट टू ट्रेड हिंडाल्को एट 395 लेवल्स इज लुकिंग रियली गुड, एंड मे बी गोइंग फॉरवर्ड इट विल ट्राई टू गो फॉर 400. और अगर हम नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, जहाँ पे बिग बिग कैंडल्स हैं, सो यहाँ पे हम देख सक रहे हैं तो दीज आर बेसिकली FMCG सेक्टर. बजाज ऑटो गिव अ वेरी गुड शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कल. सो बजाज ऑटो इज टुवर्ड्स डाउन एंड टाटा मोटर. सो बेसिकली you will find in this quadrant you will have only companies just like FMCG sector and pharma sector, so which is good. And the only company which is weirdly placed over here is TCS, but TCS is also trying to revert from 3200, and we would be tracking if it's able to take out 3230, and then we will enter into the trade, right? Or अगर हम देखें तो the weakness is good short candidates are Hero MotoCorp, or this is looking really good, and so is Maruti. कल हमने मारुति में ये डिस्कशन की थी कि हाउ वी आर गोइंग टू शॉर्ट मारुति, एंड अगेन दिस टर्न आउट टू बी अ गुड इंट्राडे ट्रेड. एशियन पेंट्स, and here you have Britannia, but the good thing is Britannia 3450 is a strong resistance, so even if it is at day's low, just like Asian Paint, but these are at reversal points. Or Coal India is also one of the companies जो is in a range bound,
and M&M. So you can understand कि M&M and you have Aisha Moto here, which is also a very good trade. अगर आप 2 सेशंस पहले से मार्केट वॉच देखते हो, मैंने बोला था कि जब आयशा मोटर 2690 तोड़ेगी, then I will enter a short, and right now it's at it went to 2650. So in general, you can see that all of these companies, they are weak, just like all the auto companies, the major names in auto. But the good thing about and in this particular format or in this particular region is Reliance is trying to get support at 2080 levels, right? And if Reliance is able to move forward and go towards 2095 2100 levels, that itself will generate a huge amount of thrust, and that itself is good. Right now, if you see in the lower quadrant, the only companies which are weak and trending are Hero Motocorp and Maruti, and also we have Aisha Moto, right? Again, we have ONGC. ONGC actually broke 118, and hence this was a very good short trade which we initiated. So no matter what, in the higher quadrant we have good private banks which are working. All of them, HDFC Bank, Axis Bank, other than Kotak, most of them are working. And on the top of that, we have Lawson and Tublo and HCL Tech, which are in the trend. And this itself, together with Axis Bank and Ultra Cement. So this is something which is giving me confidence about this about that even if Nifty goes and if Nifty gives a breakout to 16,000 levels today, I wouldn't be surprised, क्योंकि जो data formed है वो सब वेरी वेल पॉइज्ड हैं. जिन सेक्टर्स को आगे जाना चाहिए वो जा रहे हैं, जिन सेक्टर्स को मेंटेन करनी चाहिए वो मेंटेन कर रहे हैं इन द मिडिल, और जो सेक्टर्स नीचे हैं जैसे हीरो मोटर कॉप, स्पेशली ऑटोमोटिव, आयशा मोटर, ये सब बहुत ही मिनिमलिस्टिक डाउनफॉल लेके अभी बैठे हैं. एंड वी डोंट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नेगेटिव ट्रेंड इन एनीवेयर. वन ऑफ द वेरी गुड ट्रेड्स वी टुक वाज आरबीएल बैंक, जो मैंने इसके पहले वाले मार्केट वॉच में से सुबह 10 बजे से डिस्कस किया था. So we were able to enter at 215 levels, between 214 and 15, और वहाँ से वो बहुत अच्छी मूव देखे 2016-17 तक गई. So this is something which is very good. I mean 1% is enough for me. So thanks a lot for listening. Stay away from auto and stay away from pharma. Stick with IT, and if you need good IT trades, I will be posting as and when they appear, but definitely TCS is something which I would really bet in terms of my money. Of course, the first choice should be companies like HCL Tech, definitely, and Wipro, because Tech Mahindra, you can see these are in the upper quadrant, but TCS is also very good, really very good, और इसके लिए एक रिवर्सल के लिए एकदम perfect candidate है. So basically it's going to give you a very good value buying compared to we have to wait for the dips in Wipro and HCL Tech. So thanks a lot for listening. Hope this video is going to help you in planning your next trade. No matter what, don't be a fool and go for short creation even if it reverses, because theoretically this move is a very mature move. It's a hourly candle, और hourly candle में without any upper wick जब भी आती है, if the next candle is not able to devour it, and अगर ये next candle 15,880 तक अगर नहीं गई, so basically the sentiments are not that bad, and maybe it's buy in dips rather than rather than short selling the market. Thanks a lot for listening. Hope this video is going to help you in finding your next trade, and best of luck. As always, financial advisors से बात करके ही अपने ट्रेड्स फॉर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करें. बाय बाय.